बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 14 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो इम्तिहान के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर लिमिट द साइज ऑफ द बेक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं? The magnitude of the Back electromotive force induced in a coil depend upon magnetic field strength and angular velocity. Explanation: Back electromotive force is the induced electromotive force produced in a rotating coil placed in a magnetic field. So the magnitude of this electromotive force is given by E is equal to NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे N हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न, A है एरिया ऑफ द कॉइल, B है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी और साइन ओमेगा टी उसका ऑपरेटर है। सो फैक्टर अफेक्टिंग बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फर्स्ट इस पे जो फैक्टर असरअंदाज होता है दैट इज लोड। बाय यूजिंग लोड in the circuit, it will minimize the rotation of the coil, which slow down the speed of the motor. Is a result, back electromotive force decreases. Second factor है magnetic field strength. The back electromotive force is proportional to the strength of magnetic field. Thus, the size of the back electromotive force can be limited by controlled magnetic field. And the third number है इस पे जो फैक्टर असरअंदाज होता है that is called ED current. ED current means circular current. So we can also limit the size of the back electromotive force by minimizing the ED current. Question number 2 है कि why does back electromotive force tend to decrease if the rate of doing work increases? अब मिसाल के तौर पे जब जनरेटर हम स्टार्ट करते हैं या मोटर स्टार्ट करते हैं तो शुरू में उसकी शोर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो ही हम इस पे लोड डालते हैं तो लोड डालने से उसकी स्पीड कम होती, उसका शोर कम हो जाता है। सो लुक, बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ डूइंग वर्क द एंगुलर वेलोसिटी decreases, which tend to decrease back electromotive force. Explanation: when we apply load to the motor, the required rate of doing work increases. Due to this, speed of the rotation of armature decrease, and as a result, the rate of change of magnetic flux also decreases. Now, when the rate of change of magnetic flux decrease, then according to Faraday law of electromagnetic induction, the induced electromotive force H decreases. So Faraday law of electromagnetic induction है the rate of change of magnetic flux is directly proportional to the induced electromotive force. So mathematically, the current flowing through the motor when voltage V is applied R, I is equal to V minus E divided by R. अब यहाँ पे जो R है that is called resistance of the coil, E हमारे पास है बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई आर इज इक्वल टू वी माइनस ई। अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करें आई से तो आई स्क्वायर आर आई वी माइनस आई ई। अब हम जानते हैं कि आई वी पावर के बराबर है, तो आई वी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर प्लस आई ई, वेयर आई वी इज द इनपुट पावर, आई स्क्वायर आर इज पावर डिसिपेशन इन द कॉइल, आई ई is power used to do work against the back electromotive force. के बाद next question, in Faraday experiment, what would be the advantage of using coil with many turn? अब देखिए Faraday experiment में अगर आर्मेचर पे नंबर ऑफ coil या जितनी भी ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो तो उतनी ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा क्रिएट होगा।
In Faraday experiment, the advantage of by using coil with many turns is that so we can obtain induced electromotive force in changing magnetic flux according to our desire and need. According to Faraday law, induced electromotive force is directly proportional to the number of turns in the coil. जितने नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे इतना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स वोल्टेज ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. So thus by increasing number of turn in a coil, greater induced electromotive force would be produced in the coil, which result in greater current. It makes it easier to experimentally measure these quantity. Many turn in the coil give us more voltage. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इम्तिहान के लिहाज से, अक्सर पेपरों में आ चुका है कि शो दैट द रिलेशनशिप E इज इक्वल टू माइनस डी पाई बी डिवाइड बाई डेल्टा टी इज डायमेंशनली करेक्ट. मतलब सबसे इसमें से हमने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड का डायमेंशन लेना है, फिर हमने लेना है राइट हैंड साइड का डायमेंशन. यहाँ देखिए E is equal to माइनस डी पाई बी डिवाइड बाई डेल्टा टी. सो लेफ्ट हैंड साइड E हमारे पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसका यूनिट है वोल्ट, और वोल्ट बराबर होता है W बाई क्यू जूल पर कूलम. अब जूल बराबर है विच न्यूटन मीटर, और कूलम हमारे पास बराबर होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. सो क्यू इज इक्वल टू आई टी. तो एम्पियर सेकेंड. अब न्यूटन हमारे पास बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मीटर पर सेकेंड. सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकेंड क्यूब. अब किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट एंड सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम. सो दैट इज माई लेफ्ट हैंड साइड. इसके बाद हम लेते हैं राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे पाई बी डी पाई बी डिवाइड बाई डेल्टा टी. पाई बी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स और इसका यूनिट है वेबर. बी डॉट ए डिवाइड बाई डेल्टा टी. अब बी हमारे पास है एफ इज इक्वल टू बिल. सो बी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई आई एल. बी की जगह हमने पुट किया एफ डिवाइड बाई आई एल. ए हमारे पास है एरिया डेल्टा टी. सो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, करंट का यूनिट है एम्पियर, लेंथ का यूनिट है मीटर सेकेंड. कैंसल. तो यहाँ पे न्यूटन बराबर है विच है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर एम्पियर सेकेंड. अब किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, एरिया, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, टाइम इज द यूनिट, सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम. तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया. अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें तो कंपैरिजन से हमें पता चला कि E इज इक्वल टू माइनस डी पे बाई डी टी. सो दिस फार्मूला आर डायमेंशनली व्हाट करेक्ट. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5. ये भी इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल है कि गिव द फार्मूला फॉर द फ्लक्स लिंकेज इन टर्म ऑफ एंगुलर ओरिएंटेशन. द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न in the coil and magnetic flux pi b linking the coil is called flux linkage. Consider a rectangular coil of n turn such that each of area A rotating about its axis in a uniform magnetic field B of flux density B. Then pi b is equal to B dot A, so BA cos theta. The coil rotates with a steady angular velocity omega. So then theta is equal to omega t. So equation number 1 becomes pi b is equal to BA cos omega t. The product of number of turn of the coil and the magnetic flux linking the coil called flux linkage. So flux linkage is equal to number of turn multiply magnetic flux. Now multiplying in both sides of equation number 3 we get n pi b is equal to nba cos omega t. So using equation number 4 we get flux linkage is equal to nba cos omega t. This formula represents the flux linkage in term of angle orientations. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6. How electromagnetic brake works. So electromagnetic brakes are used to stop
the motion of a fast moving object such as bullet train. So they are using electromagnetic force creating torque to apply mechanical resistance. उसूल क्या है? The principle of electric brake is based on the electromagnetic induction creating ED current. ED current means circular current. Construction. Electromagnetic brake consists of two major parts. The first one is starter and the second one is rotor. Starter क्या है? It is the stationary part of the brake, so it holds 16 induction coil which can be energized separately in four groups. Second है rotor. The rotor is made of two discs which provide the braking forces when subjected to the magnetic field of the coil of the starter. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स काम किस तरह करता है, इसकी वर्किंग कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स ऑपरेट थ्रू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी but transmit torque mechanically when voltage is applied to the coil of the starter. They create magnetic field and become electromagnet. So the armature attached to the shaft of the rotor is rotating in the magnetic field of the coil, producing induced electromotive force in ED current. As the armature does so, it squeezes the inner and outer disc together. When the discs are squeezed, torque is transmitted from the bulb into the machine frame, stopping and holding the shape. When the voltage is removed from the brake, the magnetic field is off, so the armature is free to rotate with the shape. So electromagnetic brakes are used in a bullet train, speed record cars, aircraft, etc. Question number 7. Again very important question. How ED current can be minimized in transformer? अब हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि AC लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करता है. सो इट इज़ अ डिवाइस which is used for the transmission of electrical energy from one place to another. It works on the phenomena of mutual induction. And mutual induction ये है कि the rate of change of current in the primary coil is directly proportional to the rate of change of current is directly proportional to the induced electromotive force. So such that due to change in current in one coil cause electromotive force across the secondary coil. ED current means circular current. The induced current that are set up in the core of transformer in the direction perpendicular to the flux are known as ED current. It results in power dissipation and heating of the core material. इसके बाद है question number 7. Method to minimize ED current. The ED current can be minimized by replacing the solid iron core by thin laminated sheet which are stacked together. Each sheet is insulated from each other, and as a result the resistance increases. So the increasing resistance minimizes the ED current. In this way, power loss and heating effect can be controlled up to maximum extent. इसके बाद एक question number 8. How electromagnetic induction is used in cooktops in electric ranges. So we can cook the food item inside the induction heater whose principle is based on the phenomena of electromagnetic induction. अब यहाँ पे इस फिगर में देखिए ये हमारे फास्ट फूड आइटम है. यहाँ पे ये सिरामिक मटेरियल सिरामिक कुकिंग टॉप्स है. यहाँ पे हमारे पास कॉइल है वोल्टेज. यहाँ पे जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो यहाँ पे ये फूड आइटम जो है यहाँ पे ईडी करंट प्रोड्यूस होता है और फूड आइटम्स जो है वो कुक होते हैं. सो फॉर कुकिंग पर्पस द फूड आइटम आर केप्ट इन अ मेटालिक कंटेनर which is placed on ceramic cooking top. When AC power supply is switched on,
it produces changing magnetic field. So the changing magnetic field produce eddy current, which cause the production of heat in the metallic container. This heat is absorbed by the food item and thus cooked in a short period of time. So the efficiency of induction heater is greater than that of the gas heater. Question number 9. What is meant by the term bake electromotive force in any electric motor operation? So bake electromotive force, the electromotive force induced in the armature of a motor when it rotates in a changing magnetic field is called bake electromotive force in motor. When the armature of motor starts to rotate, then the magnetic flux linkage, the coil changes. So thus an electromotive force is induced in the coil, which acts in opposite direction of the applied electromotive force of the source. Such opposing force is called bake electromotive force in motor. If R is the resistance of the coil, I is the current flowing through it, then the relation between applied voltage V, IR drops in bake electromotive force is given by V is equal to E plus IR. So E is equal to V minus IR. Question number 10. Why it is an advantage for the armature to rotate in a radial magnetic field rather than in a uniform one? The advantage for the armature to rotate in a radial magnetic field rather a uniform one is that in a radial magnetic field, so uniform torque acts in the coil. The torque acting on the coil in a magnetic field is given by theta is equal to NIAB sin theta. यहाँ पे है theta is equal to NIAB sin theta की बजाय क्या है cos theta. So in case of radial field, normal to the plane of coil is always perpendicular to the magnetic field. So angle is 90. हम जानते sin 90 is equal to 1. So torque will be what? Torque will be maximum. इसके बाद है क्वेश्चन टॉर्क हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम. तो यहाँ पे 10 in a radial field, the torque acting on the coil is maximum in uniform. Question number 11. Which material would you prefer while making transformer core? Iron, solid, soft iron, aluminum. And what is the reasoning for using this material? The following feature of the material can make transformer to be more efficient. The first one, the value of permeability of material is maximum. Second, the hysteresis loss of material should be what? Minimum. So सबसे पहले है performance of iron core. The iron possesses high value of permeability, but still we consider the iron to be less efficient material. It is because it has high hysteresis losses and high eddy current. Second, performance of solid soft iron, its efficiency is high than iron because in such material the hysteresis loss are minimum. So however, the eddy current loss are high. Second, performance of laminated soft iron, these are more efficient material used in transformer. It is because they minimize the hysteresis loss and eddy current losses. Performance of aluminum, the aluminum is not used in the core or transformer because it is a paramagnetic material and is weakly magnetized in the direction of applied voltage. From above discussion, it is clear that laminated soft iron is more preferable than rest of other substance for making the transformer to be more efficient. Thank you, students.